Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goyal. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइन के साथ अर्जुन। Manipur to host the G20 Dialogue Forum for the Global Business Community from today. Domestic markets witnessed losses of 0.5%. Sensex closes near 61,000 points. Nifty settles below the 17,950 level. And global crude oil prices fall more than 2%. Brent trading around $82.95 per barrel. आर्थिक सुर्खियों में मणिपुर में आज से G20 वैश्विक समुदाय की बैठक की शुरुआत। घरेलू शेयर सूचकांकों में 0.5% की गिरावट, सेंसेक्स लगभग 61,000 और निफ्टी 17,950 के स्तर के आसपास दर्ज हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 2% से अधिक की गिरावट, ब्रेंट क्रूड $82.95 प्रति बैरल के स्तर पर दर्ज हुआ। विदेशी देशों के प्रतिनिधि B20 सत्र में भागीदारी करने के लिए इम्फाल पहुंच चुके हैं। B20 वैश्विक व्यावसायिक समुदाय के लिए G20 का आधिकारिक संवाद मंच है। राजदूतों, 24 राजनयिक और 26 विदेशी व्यावसायिक प्रतिनिधियों के साथ विश्व भर के 23 देशों के प्रतिनिधि इस सत्र में भागीदारी करेंगे। आज शाम से शुरू होने वाले इस सत्र में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश, केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह और राज्य तथा केंद्र के वरिष्ठ अधिकारी भागीदारी करेंगे। मणिपुर आज से इस 3 दिवसीय कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान यात्रा पर आए प्रतिनिधि विभिन्न क्षेत्रों के स्थानीय उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए ऑनलाइन मौजूद हैं प्रमुख अर्थशास्त्री SP शर्मा। शर्मा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी शुक्रिया, थैंक यू। शर्मा जी, किस तरह से देखते हैं G20 की जो महत्वपूर्ण बैठक है उसका एक डायलॉग फोरम B20, उसके अधिकारी मणिपुर के जैसे सुदूर नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में आज से शुरुआत कर रहे हैं अपनी आधिकारिक बैठक की। क्या मायने देखा जाए नॉर्थ ईस्ट के एक प्रमुख राज्य के तौर पे और क्षेत्रीय जो उद्योग हैं उनके लिए इस डायलॉग के क्या मायने हैं? देखिए, जो G20 में भारत की प्रमुखता है, जो भारत की प्रेसिडेंसी है और भारत एक ग्रोथ लीडर भी है इसमें, तो जिससे कि G20 कंट्रीज में भारत का प्रभाव एकदम से उच्च स्तर पे है, क्योंकि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और खास करके जो अभी इधर का जो फोकस है, जो मणिपुर का जो नॉर्थ ईस्ट के लिए सरकार कर रही है, और क्योंकि उस प्रोविजन में उसमें ज्यादा से ज्यादा जो अपॉर्चुनिटीज हमें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ये एक एमर्जिंग रीजन है इंडिया का, जिसमें अभी जो ग्रोथ है वो बहुत ही एक पोटेंशियल लेवल पे जा सकती है। और जब वो ग्रोथ पोटेंशियल लेवल पे जाएगी तो वो एक बड़ा लीड इंडिकेटर बन के आगे जो हमारे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है। तो इसके मद्देनजर जो बैठक है उसकी महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंस है वो इसी के मद्देनजर है कि आने वाले टाइम में जो डेवलपमेंट एक्टिविटी है इस रीजन में वो एकदम उच्च स्तर पे रहे, और जो कि एक क्षेत्र जिसमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो और एक नई संभावनाएं पैदा हो। जिस तरह से 26 विदेशी व्यावसायिक प्रतिनिधि भी इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं, इससे क्या माना जाए कि सरकार का पूरा फोकस कहीं न कहीं इस तरीके से है कि व्यापारिक संभावनाओं को तलाशा जाए और उनको और प्रोत्साहन दिया जाए? जी, उनको स्ट्रेंथन करने की बात है कि जो अनएक्सप्लोर्ड एरियाज हैं, जिसमें कई चीजों को हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं और पोटेंशियल काफी उच्च स्तर पे होता है, तो उसी के मद्देनजर हमें एक अपना पोटेंशियल लेवल ग्रहण करते हुए आगे जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसको और सुदृढ़ बनाना है। यही मैं समझता हूं कि एक मुद्दा है। Dr. Sharma, foreign direct investment is being sought in the state of Manipur, or are we talking about the northeast region? Because
this G20 dialogue, is it state specific or is it region specific? No, that is the region specific. That should not be any state specific, because that is for the whole India and for the regions and for the states. So I am talking about the whole region, that this region is a major indicator and growth-oriented region, which has potential to move forward with a great growth trajectory, which is still not explored. So there is a lot of unexplored potential which can be explored with the help of the international developments and the international opportunities. नजर डालते हैं शेयर बाजार पर। घरेलू शेयर सूचकांकों में लगभग 0.5% की गिरावट रही। वैश्विक बाजारों के कमजोर रुझानों से घरेलू शेयर बाजारों में नुकसान का दौर रहा। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 0.5% की गिरावट से 317 गिरकर 61,003 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.5% के नुकसान से 92 अंक गिरकर 17,944 के स्तर पर दर्ज हुआ। बीएसई मिड कैप सूचकांक में 0.8% और स्मॉल कैप सूचकांक में लगभग 0.3% की गिरावट दर्ज हुई। Sensex and Nifty today witnessed losses of about 0.5%. The Sensex ended near 61,000 points and Nifty closed below the 17,950 level. Both the stock indices fell amid mixed global cues. Sensex declined by 317 points, or 0.52%, to finish at 61,003. Nifty 50 also fell by 92 points, or 0.51%, to settle at 17,944. In the broader market at the BSE, the mid-cap index declined by 0.75% and the small-cap index fell 0.25%. In the Sensex pack, Larsen & Toubro was the top gainer as it rose by 2.2%, followed by Ultratech Cement, which gained 1.8%. Asian Paints added 1% and NTPC ended 0.5% up. On the other hand, Nestle India slipped for 3.1% and IndusInd Bank declined 3%. Mahindra & Mahindra lost 1.9% and State Bank of India ended 1.7% down. In sectoral indices of the BSE, 15 sectors logged losses while 5 sectors logged gains. Capital goods gained 0.9% and industrial sector added 0.3%. Oil and gas and energy both appreciated by 0.2% each. On the other side, realty tumbled 1.9% and telecom declined by 1.3%. Tech sector and BankX both fell 1.2% each. IT sector ended 1% down. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,504 companies gained while 1,944 fell. Shares of 142 companies remained unchanged. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज 82 रुपये 83 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। डॉलर इंडेक्स 0.7% की मजबूती से 104.6 के स्तर पर दर्ज हुआ। डॉक्टर शर्मा, किस तरह से देखेंगे शेयर बाजार में आज की हलचल को? क्योंकि अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो जहां तकरीबन 1950 के आसपास कंपनियों में बढ़त रही और वहीं 1500 कंपनियों में तकरीबन गिरावट रही, तो इस तरह से कैसे आंकते हैं? क्योंकि ये गिरावट अब लगभग काफी दिनों से चली आ रही है और क्या ये माना जाए कि सेंसेक्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दबाव है? जी बिल्कुल, उसके पीछे दबाव है क्योंकि एक तो डॉलर भी काफी स्ट्रेंथ हुआ है पीछे से कुछ दिनों में, और दूसरा जो अनसर्टेनिटी जो इन्फ्लेशन को लेके, पहले इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी बहुत कम हो गई थी, 6% से नीचे जो आरबीआई के टारगेट रेंज में है उससे इन्फ्लेशन नीचे था, तो अभी वापस इन्फ्लेशन जो है वो 6.5% पर चला गया है, जो कि एकदम से अनएक्सपेक्टेड था, एकदम से इन्फ्लेशन में इतना एस्केलेशन आना। तो जिस वजह से एक अनसर्टेनिटी, एक कंफ्यूज्ड जिस तरीके से मूड होता है कि शायद आने वाले टाइम में जो सेंट्रल बैंक है वो अपना जो हॉकिश जो पॉलिसी एनवायरनमेंट है उसको जारी रखेगा, शायद फिर कहीं आगे रेपो रेट इंक्रीज हो, लेकिन पहले ऐसे लगता था कि शायद अभी जो पॉलिसी रेट्स हैं उनके ऊपर कुछ लगाम रहेगा क्योंकि इन्फ्लेशन ऑलरेडी कंट्रोल में आ चुका था और इन्फ्लेशन हर एक महीने डेसिलरेट हो रहा था, और ऊपर से जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी, ग्लोबल ग्रोथ बहुत ही फ्रेजाइल है, बहुत सारी इकोनॉमीज अभी इस साल में नेगेटिव ग्रोथ रेट्स पोस्ट कर रही हैं, तो जिसकी वजह से टोटल जो डिमांड ट्रैजेक्टरी है वो इम्पैक्ट हुई है, और ये सभी फैक्टर्स मिलकर एक मार्केट्स में एक अनसर्टेनिटी का दोबारा से एक माहौल पैदा हुआ है जिससे जो मार्केट्स अभी काफी आने वाले टाइम में रेंज बाउंड रह सकती है। Dr. Sharma, Nasdaq and Dow Jones along with S&P 500 fell in yesterday's trade. We saw FII activity being net sellers to the tune of 625 crore rupees. You're speaking about global headwinds. Do you see that continuing next week? Because today is Friday. We're looking at the post
weekly F&O expiry on Thursday. How do you see next week in terms of stock market performance, or do we expect a bounce back, especially with the dollar index perhaps weakening? Yes, I see that there will be lot of uncertainty and volatility in the market because dollar is strengthening and the fundamentals do strong, but the inflation trajectory is becoming again worrying. So that's why the markets are in not that much positive mood that they should go up and up. So there is a profit booking after certain point of time. So markets will remain volatile but remain range bound, but there is no worry to decelerate much from the current level because overall growth trajectory is intact and other variables such as infrastructure growth, IIP numbers are very much intact. But the major worry is from the inflation side, which is again escalating and impacting the of the market players. So speaking of inflation, do you expect corporate performance to be compromised as a result of their procurement prices going up and then eventually reaching the consumer in terms of the retail price and their difficulty in making that purchase because of high prices? And that's one. And secondly, do you see the stock market being overpriced right now in terms of the price to earnings ratio? I think the price earning ratio or result of the companies will be in the expected trajectory. They will be showing the uptick and according to the market expectations. But the numbers such as the prices of the certain commodities, particularly in the food segment, are worrying once again because now the Rabi crops will be coming after 2-3 months. So there is a gap between the fulfillment of the demand and supply gap. So going forward, I think 2-3 months, next 2-3 months are very, very crucial to move forward and to fulfill the demand trajectory with the lot of measures, as the government is already taking measures to free the stocks. So something is expected that inflation trajectory must balance in the coming times, but this time this is a major worrying factor for the markets. डॉक्टर शर्मा, जिस तरह से अगर सेक्टर की बात करें तो पिछले काफी दिनों से बैंकिंग काफी बेहतर प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन आज तकरीबन 1% से अधिक की गिरावट है। लेकिन वहीं अगर रियल्टी की बात करें तकरीबन 2% की गिरावट है। किस तरह से आंकते हैं? बैंकिंग क्षेत्र का प्रदर्शन तो बहुत बेहतर था और अब महंगाई को देखते हुए जिस तरह से रिजर्व बैंक ने हाल ही में ब्याज दरों में भी परिवर्तन किया है, फिर बैंकिंग क्षेत्र में दबाव किस तरीके से है? जी बिल्कुल, जब आरबीआई बढ़ोतरी करता है, जब रेपो रेट बढ़ता है तो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट तो इकोनॉमी के ऊपर आता है और उसका कुछ चुनिंदा असर जो है वो कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स के ऊपर भी आता है, जैसे बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, क्योंकि लोन डिसबर्समेंट्स उस टाइम पे थोड़े टीडियस हो जाते हैं क्योंकि हाई इन्फ्लेशन रेट में, हाई इंटरेस्ट रेट्स में जो लोन डिसबर्समेंट्स हैं, जो लोन डिमांड फॉर लोन्स थोड़ा कम होती है, तो जिससे जो बैंकिंग सेक्टर है उसको आने वाले टाइम में थोड़ा इम्पैक्टेड, जो टर्नओवर्स हैं, जो रेवेन्यूज हैं, वो थोड़ा इम्पैक्ट होते हुए दिखाई देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ पर्टिकुलर शेयर जो स्टॉक्स में जो दिग्गज हैं बैंकिंग सेक्टर में, वो काफी देर तक इम्पैक्टेड थे। अभी जब इन्फ्लेशन में डाउनफॉल शुरू हुआ, इन्फ्लेशन डिसेलिरेट हो रहा था, तो प्राइसेस जो बैंकिंग के स्टॉक्स थे वो काफी अच्छे से मूव लिए। लेकिन अगेन जब इन्फ्लेशन का एक वापिस एक वरी आ गया है तो वापिस जो इम्पैक्ट है वो दिखना शुरू हो गया है। भले ही ये अभी कुछ ही इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम में अगर इन्फ्लेशन वापिस एस्केलेट होता है तो काफी इम्पैक्ट हो सकता है। महंगाई यानी मुद्रास्फीति के बारे में आपने बात करी, ये कितना लंबा असर इसका पड़ता हुआ नजर आता है? क्योंकि काफी दिनों से जैसा आपने भी बताया कि मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन के दौर पे काफी राहत की बात थी, अगर इसमें जरा सा भी जैसे बदलाव हुआ है तो बाजार सतर्क हो गया है। क्या मानते हैं कितने समय तक ये बाजार को प्रभावित करेगा? देखिए, जो काफी मेजर्स लेने के बावजूद भी, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट पिछले लगभग कोई 10 महीने से ऐसे मेजर्स ले रहे हैं। लास्ट ईयर मार्च के महीने से ये इम्पैक्ट करना शुरू किया था, लेकिन अभी तक जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, जो सीपीआई इन्फ्लेशन है, बहुत स्टिकी जोन में है। उसमें एक रेंज बना हुआ है, वो 6.5%, 6.25 से लेके वो वापस 6 पर और इसी के बीच में एक स्टिकी जोन में है। तो
जब तक इसमें सॉफ्टनिंग नहीं होती, ये अपना कंटिन्यूसली डिसेलरेट नहीं करता, लगभग कोई 5% के पास नहीं आता या उससे भी नीचे नहीं आता, तब तक जो अनसर्टेनिटी अभी बनी रहेगी। लेकिन एक्सपेक्टेड है कि इन्फ्लेशन जरूर आने वाले 2-3 महीनों में कंट्रोल में होगा और जो मार्केट प्रोसेस है, जो मार्केट जो बिहेवियर है, वो काफी स्टेबल हो जाएगा। अच्छा, रिटेल इन्फ्लेशन और जो थोक मूल्य मतलब WPI इन्फ्लेशन जो है उसमें काफी फर्क है, क्योंकि WPI में उतनी बढ़त नहीं जितना कि रिटेल में है। इसकी वजह से भी क्या कोई विशेष कारण मानते हैं? जी, उसमें क्या है, WPI में मेजरली जो प्राइसेस हैं वो रॉ मटेरियल के रिफ्लेक्ट होते हैं, क्योंकि जो भी हमारे इंटरनेशनल कमोडिटीज हैं वो ज्यादातर WPI में रॉ मटेरियल्स के शेप में उसको प्रभावित करते हैं। जैसे कि पहले इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस काफी ऊपर थे, इन्फ्लेशन को हमने WPI इन्फ्लेशन को 16-17% के ऊपर देखा, लेकिन अभी जो इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस हैं उनमें काफी डिसेलरेशन हुई है। एक तो ये कारण है, और दूसरा जो YOY ग्रोथ, पिछले साल इन दिनों में WPI इन्फ्लेशन काफी हाई रेट पे था, तो जिसकी वजह से अब जो हाई बेस इफेक्ट है वो उसको इतना ग्रोथ नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से वो काफी डिसेलरेट हुआ है और हो सकता है आने वाले टाइम में और भी डिसेलरेट करे। उसी तरीके से जो इन्फ्लेशन CPI की ट्रैजेक्टरी है, जब उसको आगे अभी हाई बेस मिलेगा, अभी जैसे मार्च और अप्रैल में जाके बेस हाई हो जाएगा, तो तब उसमें कुछ संभावना है कि वो एक अपने एक्सपेक्टेड जोन में लगभग कोई 5% के आसपास आ जाएगा। Dr. Sharma, Bank Nifty fell by 500 points in today's trade. You mentioned about inflation and the bank rate going up because of the 25 basis point hike by RBI. What does this mean for those who have taken loans or those who are applying for loans? Is there likely to be a risk of default, which is why valuations are going up, or valuations have been going down? What is your take? How would you advise investors who are looking at the banking sector, because of net interest income going up, that is a trade-off in terms of, and when you compare it to possible risk of default? Yes, Arjun, because now inflation is escalating once again, but the next numbers coming in the month of March will be very, very crucial. If the inflation is again going up, then that will negatively impact the markets and all the other fundamentals for the short term, because that will again will not remain in the high trajectory. As I said earlier, that high base will impact the high zone of the inflation. But that can impact in a shorter period like March, April, if the inflation is becoming again and again in the high zone, then that will be negative for the markets. What about the interest rate sensitive sectors like auto and realty? Are they also watching the repo rate numbers and inflation in terms of consumer demand and purchase for the goods and services they provide? Yes, because now RBI will also watch the next inflation number, but right now I think RBI has already increased with many repo rates, and already we are at 6.5%. So rationally there should not be any increase in the repo rate, because repo rate is already high, and this inflation is because of the majorly such kind of articles which are in the essential items. So I think if the inflation is stagnated at this juncture also, like somewhere between 6 to 6.5%, then RBI may take a pause to increase further the repo rate. But the companies which are demand-driven companies and demand-driven sectors will remain in the uncertainty till inflation becomes stabilized in the normal zone. डॉक्टर शर्मा, अभी हम मुद्रास्फीति, महंगाई और इन सब चीजों पे बात कर रहे थे। ऑटो क्षेत्र को अगर देखें, उसके ऊपर दो तरफा मार है, क्योंकि अगर ब्याज दरों में बढ़ोतरी होती है तो कहीं ना कहीं ऑटो लोन निश्चित तौर पे महंगे होते हैं, और वहीं उनको कंपोनेंट्स की उपलब्धता पे भी जो देरी हो रही थी, जिसकी वजह से जो भी खरीदार थे उनको भी काफी समय तक इंतजार करना पड़ रहा था। किस तरह से मानते हैं ऑटो क्षेत्र के लिए ये दो तरफा जो मार है उससे उबरने में कितना समय लगने की संभावना है, और ऑटो क्षेत्र का प्रदर्शन कब वापस पटरी पे आएगा? देखिए, रिकवरी प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू है। मैं समझता हूं कि जो लास्ट ईयर 2022 वाज ए ईयर ऑफ रिकवरी, एंड
this 2023 will also support and strengthen the recovery process. And going forward, I think if the global uncertainties and there is diminishing effect in the global uncertainties like the Russia-Ukraine war and the other factors like the inflation, if decelerates in the comfort zone, then recovery process will continue and it will strengthen in the first 2 quarters of the current year. नजर डालते हैं एशिया बाजार पर। एशियाई बाजारों में आज आमतौर पर मंदी का दौर रहा। अमेरिका में महंगाई के आंकड़ों से वैश्विक तौर पर निवेशकों में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंकाएं रहीं। हांगकांग का हैंगसेंग 1.3%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.1%, चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.8% और जापान का निकेई 0.7% की गिरावट से बंद हुआ। हालांकि सिंगापुर का स्टेट्स टाइम्स सूचकांक 0.5% की बढ़त बनाने में कामयाब रहा। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में मंदी का दौर रहा। जर्मनी, फ्रांस और लंदन के शेयर सूचकांक 0.9% से 0.2% तक की गिरावट के दायरे में कारोबार करते नजर आए। Moving on to the US market, Wall Street ended sharply lower yesterday after unexpectedly strong inflation data and a drop in weekly jobless claims added to fears that the US Fed Reserve will keep raising interest rates to tame high prices. Dow Jones Industrial Average fell 1.3%, the S&P 500 declined by 1.4%, and the Nasdaq Composite Index lost 1.8%. Dr. Sharma, just looking at the Asian markets and the US markets, we seem to be, both the markets are affected by inflation. What's the real reason behind rising inflation? Price rise, demand is there. Why is it that we are seeing a rise in commodity prices despite China just coming out of its lockdown? Apart from India, all other markets, the demand is low, supply is high. Yes, despite so many measures undertaken by the central banks and the synchronized move by the central banks to increase the interest rates, but the commodity prices are still in not a comfortable zone. They are still high. So that's why these prices are impacting the inflation trajectory of many countries. Like the advanced economies are majorly not able to see the levels in their comfort zones in their respective inflation numbers. And in the emerging economies like India, again, we are observing that inflation is becoming high and headline inflation is still not in the comfortable zone, though the WPI inflation has decelerated significantly. But the impact of the high inflation in the advanced economy is impacting the growth process of the other emerging economies also, because when the prices remain high in the international commodity market segment, then the raw material cost becomes high and the price cost margins are reduced. So that's why the sentiments for production are also declined. So going forward, inflation should come down in the international market, like in the major economies, so that the prices of the commodities are rationalized. And firstly, the prices must rationalize with the other efforts, like the government or the central banks. They are increasing the interest rates, but there is no significant impact on the prices of international markets. That may be because of the high liquidity available to the speculators. So going forward, I think if the cost of carry remains high, then there will be some correction in the international commodity prices in the coming times. Dr. Sharma, are economic measures sufficient to tame inflation, especially where measures have already been taken and rising interest rates can prove to be counterproductive as they are clearly on consumer demand? What about legal measures in terms of imposing price controls under the Essential Commodities Act like we have in India? Why not globally as well? Because vendors seem to be taking an opportunity with the Russia-Ukraine war to increase the price of commodities and materials across every type of group. Yes, because the major impact is also from the disrupted global value chains because of the global geopolitical development. So some disrupted value chains are also impacting the price trajectory, though the demand is not that much high, but the disrupted value chains are escalating the prices, sometimes non-availability of the desired products. So that's why the prices remain at this level, sticky in the high zone. Dr. Sharma, how concerned are you with the Nasdaq readings? The market fell by 215 points, and the associated employment news
regarding unemployment in a lot of these top companies where they are firing because they need to cut down on their operational costs and ensure that the top line and bottom line is in that zone which will ensure the company continues forward. Do you see a spillover into our market as well, or other markets for that matter, what's happening in the US? No, there will not be any much negative impact on our market because our economy is different and our reform process and our growth trajectory is very, very strong. But the uncertainty and the volatility will remain, and the markets can remain volatile for a certain point of time. But in the US, because the dollar is again strengthening, so that's why I think the recovery process will not be that much intact, and the other policy measures are required to balance the economy, to create the employment, and to stimulate the economy. I think once again to provide some leverage to the companies so that they are able to move forward with a smooth process. The short-term treasury notes in the US for 6 months and 1 year has now crossed the yield of 5%. Do you see a negative correlation? Do you see equity market go down and the debt market go up in terms of yield in the US, or is this just a temporary blip? Yes, some impact on the equity markets will remain, and that's why I'm saying that markets will be volatile and face the uncertainty. But going forward, the yields, I think, for the longer term should not be that much gainful in the coming times, because the strong dollar can't help the American economy to recover from the low growth rate of the GDP. Let's have a look at the oil market now. Oil fell more than 2% today and was heading for a weekly decline as strong U.S. economic data heightened concerns that the Fed Reserve would further tighten monetary policy to tackle inflation, a move that could hit fuel demand. In intraday trade, Brent crude was trading at $82.95 per barrel, while WTI crude price was at $76.32 per barrel. How concerned are you about oil prices briefly in terms of the attempt at cartelization once again by OPEC? Yes, because these prices are not majorly driven by the demand, but some cartelization and some thought process. So that's why the prices are maintained at this level. But the demand is indicating that there will be a deceleration in the prices if the prices are not maintained with these specific efforts. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल के वायदा कारोबार में सोना 396 रुपए के नुकसान से 55,832 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ। चांदी भी 1,144 रुपए के नुकसान से 64,489 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर रही। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोना गिरावट से $1,832.40 प्रति औंस के स्तर पर दर्ज हुआ, जबकि चांदी मंदी से $21.17 प्रति औंस के स्तर पर दर्ज हुई। डॉक्टर शर्मा, बहुत संक्षेप में सोने और चांदी में अभी किसमें कितना दम और कितनी चमक बाकी है? देखिए, चमक तो बहुत बाकी है, लेकिन थोड़ा डॉलर के स्ट्रेंथ होने की वजह से ये शॉर्टर टर्म फॉल देखने को मिला है, जो मैं समझता हूं कि ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। वो वापस अपना स्ट्रेंथ गेन करेंगे और दोनों में चमक जारी रहेगी। डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आने और चर्चा के लिए धन्यवाद। जी शुक्रिया, थैंक यू। और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर। And before we close, a reminder of the headlines. Manipur to host the G20 Dialogue Forum for the global business community from today. Domestic markets witness losses of 0.5%. Sensex closes near 61,000 points. Nifty settles below 17,950 level. And global crude oil prices fall more than 10%. Brent crude trading around $82.95 per barrel. आर्थिक सुर्खियों पर एक नजर एक बार फिर। मणिपुर में आज से G20 वैश्विक समुदाय की बैठक की शुरुआत। घरेलू शेयर सूचकांकों में 0.5% की गिरावट। सेंसेक्स लगभग 61 और निफ्टी 17,950 के स्तर के आसपास दर्ज हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 2% से अधिक की गिरावट। ब्रेंट क्रूड $82.95 प्रति बैरल के स्तर पर दर्ज हुआ। And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.